So you can see the screen, you can see the presentation. Yes, sir. Yes, sir. Okay. So unit 1 we have completed. Okay. Industrial relation, introduction to the industrial relation. Okay. Can anyone just tell me what is industrial relation means? The What? relationship between the employer and the employees, the trade Right. unions, The labor. relation between the employer and the employee is known as the industrial relation. The cordial relation between the employer and the employee is said to be the industrial relation. So, industrial relations should always be harmonious enough in the organization. It is more important that it should be good enough into the company so the smooth running of the organization can be happen. So it is more importantly that always whenever you have employee and the employees and the employer in the organization, uh, the company, the management should always see to that there should not be any kind of dispute, any kind of issues between the employer and the employees. Okay. This is the main concept of the industrial relation. When you talk about the second unit, when you come to chapter 2, okay, it is the industrial dispute. Why the industrial disputes happen in the organizations, what are the reasons mostly the dispute occurs in the organization, who face the major issues in the organization, what are the major reasons we will see in this chapter. Okay, how this dispute can be resolved with or without the consent of a government. Okay, how the government has their role in resolving the issues in the organizations. अगर रिजॉल्व नहीं होते, रिजोल्यूशन नहीं होता है या डिस्प्यूट खत्म नहीं होता है तो उसका एंड कंक्लूजन क्या निकलता है, दिस विल सी इन दिस चैप्टर. So industrial dispute is a self-explanatory word. It is means of conflict. Okay, dispute का मतलब होता है झगड़ा, conflict होना. So the entire picture itself says that कि there is always a conflict between the employer and the employee, and there would be a many reason due to which the conflict or the differences in the opinion of management and workers happen. Now, why this dispute or differences comes across the employee and the employer? There would be a pay, working conditions, over pressurizations of the work. The management is not giving good amount of facilities to the employees. They are pressurizing on the works. They are not giving bonuses, incentives, perks, benefits. Okay, they are not giving facilities. Salary increase increment नहीं होता है. Overtime उनको properly नहीं मिलता है. So these are the reasons due to which the dispute occur in the organizations. Now when you see कि ऐसे disputes होते हैं तो उसका इफेक्ट कहीं ना कहीं पे कंपनी को फेस करना पड़ता है. वो कहाँ पे फेस करना पड़ता है कि प्रोडक्शन नहीं होता. वेन एवर इज अ डिस्प्यूट बिटवीन द एम्प्लॉयज एंड द एम्प्लॉयज आर नॉट रियली working from their heart, they're not working properly. Okay, they just work to fill the entire day or the 9 hours or 8 hour shift, due to which there's a loss of production faced by the organization. Whenever there's a loss of production faced by the company has to face a loss. There is no profit happens in a company. Okay, they might be lose the market, they might be lose the entire stuff. Okay, sometimes there's a closure in a market, there's a closure of organization as well. So many things are there, many ifs and buts are there whenever such kind of disputes occur. If such kind of disputes go beyond the control of the management or the employees, in same time the company need the employees go for a strike, the employees go and do good amount of strike in an organization, they do good amount of gheravs. Okay, the company go for layoff. Sometimes if they found a huge pressure, they also can go for lockdown, retrenchment of an employee. So there's a many things happening into the organization. So this is a main is a very small introductory part of an industrial dispute. Majorly or you can say maximumly जो dispute companies में होता है वो dispute salary को लेके होता है, wages को लेके होता है,
or you can say the economical factor. Whenever the economical factor come across in the organizations, there is a huge amount of dispute happens, because each and every employee work for the entire day, work for 9 hours shift, 10 hour shift, and at the end of the month, if they're not getting the proper salaries, there is a dispute will occur. Despite a company is earning good amount of profit, they are earning good amount of returns, they basically face huge loss. इसके अलावा this is all economical loss. There's also the non-economical loss happens. Non-economical factors are also there. Psychological factors also faced by the organizations. Social consequences. There's a no proper bonding between the employees or between two unions working together in the organization. Loss of property. ये सारे झगड़े में कंपनी के जो लैंड एंड बिल्डिंग है, मशीन्स है या उनके व्हीकल्स होते हैं, वो कभी कभी डैमेज कर देते हैं, उनको नुकसान पहुंचाते हैं, आपस में झगड़े हो जाते हैं, तो देयर इज अ पर्सनल इंजरी एज वेल, फिजिकल डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, फिजिकल फाइट हो जाती है, इनकन्वीनियंस अकर्स हो जाते हैं. So these are the non-economical factors or non-economical consequences always faced by the employees in an organizations. So these are the economical factors and non-economical factors which is faced in an organization, and especially by both from the management perspective as well as from the employees perspective. So this is a basic introductory part of the industrial dispute. Okay, now we'll move forward. Okay, the industrial disputes are common industry. You can see abhi, this is one of the pandemic is happening in entire world, and despite this pandemic, the many organizations now got an opportunity कि वो लोग अपने companies का downsize करना चालू कर दें. So companies face issues, companies make sure that कि वहाँ पे उनके एम्प्लॉयज कम हो जाए, उनको जितना एम्प्लॉयज कम कर सकेंगे उतना उनको उनको बेहतरीन उनको उतना पैसा नहीं देना पड़ेगा एम्प्लॉयज को, तो दे कैन सेव द मनी. We have seen the people at the range of VP, vice presidents, general managers, AGM managers, branch manager, इतने लोग को भी निकाला गया है organizations ने. So there's a huge problem nowadays are facing by the people in the organizations. So they present themselves in the forms of strikes, lockdowns and bunds. Okay, सो स्ट्राइक्स होते हैं, लॉकडाउन्स होता है, बंद बंद मतलब सब कुछ बंद होता है. ओके, इसके कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं लॉस ऑफ प्रोडक्शन, लॉस ऑफ प्रॉफिट, लॉस ऑफ मार्केट एंड इवन द क्लोजर ऑफ द प्लांट. Most over whenever you talk about the disagreement between the employer representative and employees representative due to the trade union overpay working conditions के वजह से होता है. So, as per Section 2, subsection K of the Industrial Dispute Act 1947, an industrial dispute is defined as any dispute or differences between employer and employers, or between employers and workmen, or between workmen, and which is connected with the employment or non-employment or terms of employment or condition of a labor of any person. This is a definition of industrial dispute, okay, under the Industrial Dispute Act 1947. So there's also a causes. Okay, dispute in the industry can be attributed to wide and varied reasons. The major ones related to the wages, union rivals, political interference, unfair labor practices, multiplicity labor laws and others. See, whenever you talk about the major ones, मतलब wages is the most common thing, या आप बोल सकते हो कि ये रेगुलर मैटर है हर कंपनी का कि सैलरी, वेजेस नहीं मिलते, बोनसेस नहीं मिलता, और ये सारे फैक्टर्स पे इनके झगड़े होते हैं. So this is the most common thing you can see in every organizations. यूनियन राइवल्स का मतलब होता है कि जो कंपनी में दो से ज्यादा यूनियंस होते हैं या एक से ज्यादा यूनियंस होते हैं, वहां पे दो यूनियंस एक दूसरे के आमने सामने आके खड़े हो जाती हैं. ओके, यूनियन ए एंड यूनियन बी. जो यूनियन ए को एक्सेप्टेबल होता है वो यूनियन बी को एक्सेप्टेबल नहीं होता है, जो यूनियन बी को एक्सेप्टेबल होता है वो यूनियन ए को एक्सेप्टेबल नहीं होता है. सो देयर इज ऑलवेज अ डिस्प्यूट, देयर इज ऑलवेज अ फाइट बिटवीन टू यूनियंस. पॉलिटिकल इंटरफेरेंस का मतलब होता है कि वेन एवर देर इज अ ट्रेड यूनियन
whenever there's a union come in the organization, there's always the political factor will get enter into this thing, कि पॉलिटिकल पार्टी यहाँ पे आएगी, पॉलिटिकल पार्टी का इन्वॉल्वमेंट होगा। ओके, पॉलिटिकल पार्टी इसमें जैसे नारायण राणे का कोई यूनियन है या उद्धव ठाकरे जी का कोई यूनियन है, तो जब भी किसी भी इंडस्ट्रीज में कोई यूनियन होता है तो इट इज रिलेटेड टू दी political parties. So that would be a Shiv Sena, that would be a Manse, whatever will be there, it will be have some political relevance. तो पॉलिटिकल कनेक्शन उसमें होते हैं। अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस, दैट शुड बी देयर ऑलवेज, यू कैन सी कि अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस भी देखा जाता है कि एम्प्लॉय एक्स को ये सारे बेनिफिट्स दिए गए हैं, एम्प्लॉय वाई को ये सारे बेनिफिट्स दिए, despite both the employees are working on a same designation with the same salary, with same responsibilities and duties, they have same skill sets, they have same knowledge and competencies, ये दोनों में unfair होता है because कोई एक्स एम्प्लॉय इज क्लोजर टू द वाइस प्रेसिडेंट और वाई एम्प्लॉय doesn't have any relationship, they doesn't have any good contact in an organization, तो unfair labor practice के वजह से भी यू कैन सी होता है ना कभी कभी कि आपका दोस्त है तो आपको दोस्त थोड़ा थोड़ा साइड कॉर्नर करोगे या उसको ज्यादा फेवर करोगे, ड्यू टू विच you make sure that your friend get maximum benefit rather than the other person. So this happens in an organization as well. Then multiplicity labor laws and other, there are n numbers of labor law is already formed, okay, in books. बहुत सालों से, बहुत टाइम से लेबर लॉ बनाया गया है और लेबर लॉ फॉर्म हो चुका है। एंड वो भी लेबर लॉ अमेंडमेंट होते 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 नए नए लेबर लॉस आए हुए, लेकिन पहले भी लेबर लॉ थे। तो इफ सम रेजुलेशंस, इफ सम what you say, some rules have passed, some judgment has passed with the previous law, तो उसको अगर पकड़ के चलेंगे तो इन फ्यूचर एम्प्लॉयज सी दैट कि हाँ सर ये लॉ के बेस पे हमने ये जजमेंट पास किया था, नाउ द लॉ हैज चेंज, तो आप अभी ऐसे क्यों बोल रहे हो। सो देर आर मेनी फैक्टर्स ड्यू टू विच द कॉन्फ्लिक्ट्स हैपन इन द ऑर्गेनाइजेशन। फॉर एग्जांपल, मेरा प्रमोशन हुआ था 2018 के लॉ के बेस पे, या 2018 के जो रूल्स रेगुलेशंस के बेस पे मेरा प्रमोशन किया गया। बट 2019 में अमेंडमेंट आया कि ऐसा कुछ प्रमोशन, ऐसा चेंजेस करेंगे हम लोग जिससे किसी को भी अनडू एडवांटेज नहीं मिलेगा। लेकिन जब 2018 में मेरा प्रमोशन किया गया था, वो टाइम पे तो ऐसा कोई रूल रेगुलेशन नहीं आया था ना कि ऐसे बेसिस पे हमको ऐसा प्रमोशन विदाउट एनी परफॉर्मेंस, विदाउट एनी सीनियरिटी हमको प्रमोशन देना चाहिए था, वो ऐसा कुछ था नहीं वो टाइम पे। सो द एम्प्लॉय कैन गो टू ट्रिब्यूनल कोर्ट, ही कैन गो टू हाई कोर्ट एंड फाइट कि when my promotion took place in 2018, this law was not came into act। तो मुझे प्रीवियस लॉ के हिसाब से मेरा प्रमोशन किया गया था, अब ये नया वाला एक्ट आया है तो उसका कोई रिलेवेंस है नहीं, क्योंकि जब मेरा प्रमोशन हुआ तब ओल्ड एक्ट के हिसाब से हुआ था। सो दिस मल्टीप्लिसिटी लेबर लॉ के वजह से भी बहुत सारे नुकसान होते हैं। ओके, सो देर आर टू काइंड्स ऑफ what you say, causes you can always see। फर्स्ट economic causes and second is non economic causes। first economic cause का मतलब होता है wages and bonus। you can see the presentation ना, आपको presentation दिखाई दे रहा है ना properly? Yes, sir. okay, my voice is also loud and clear ना, समझ Yes, में आ रहा है ना sir. properly? हाँ, sir. Yes, sir. ओके, सो इकोनॉमिकल कॉसेस का मतलब होता है whenever there is a problem which occurs in an organization due to economical issues। okay, that would be wages, salary, bonuses, would be any reason that comes under your economical losses। Non-economical causes are the listed below: retrenchment and closure, layoff, hours of works, leaves, indiscipline and violence, management practices, trade union, legal and political factors, and miscellaneous cause। So retrenchment and closure. What is retrenchment?
रिट्रेंचमेंट का मतलब क्या होता है? Any idea, any guesses what is retrenchment? Sir, when the company is about to close and when they remove the employees, but then they give them assurance that whenever they will open in future, they will get first preference for jobs. That's come under your layoff. See, retrenchment is removing of the employees with or without the consent of the employees. Management can remove the employees from the organization without the consent, without the notice of an employees. Okay, that would be any reason कि कुछ काम है नहीं है. It is equal to termination. Okay, closure का मतलब होता है कि the company is closed down, the company is getting closed. Okay, परमानेंटली कंपनी बंद होने वाली है, उसको हम लोग क्लोजर बात करेंगे. Closure. Yes, sir. रिट्रेंचमेंट का ये होता है कि वेन एवर दी एम्प्लॉयज are there, employees are removed from the organization any time with any reason. कभी भी employees को काम से निकाल दे सकते हैं permanently. Okay, that said to be in your retrenchment. यहाँ पे वापस हम लोग employee को नहीं लेते हैं. What Lesmark right now said that कि whenever there's a no work in an organizations या काम कंपनी में काम नहीं है या रॉ मटेरियल नहीं है या इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, मशीनरीज ब्रेक डाउन हुए हैं, देर वुड बी एक्स वाई जेड रीजन ड्यू टू विच इज नो वर्क. ओके, कैपिटल नहीं है, कंपनी के पास पैसा नहीं है, तो ऐसे वक्त पे दे ले ऑफ द एम्प्लॉयज. नाउ nowadays you can take a simple example. कोविड में अभी बहुत सारे कंपनीज के पास काम नहीं है, so they are laying off the employees, they are downsizing the employees. Okay, what they are giving, they are sitting, they are making that they'll keep the employees on they sit in a bench. Okay, आपको ले ऑफ करेंगे, आपको उसकी सैलरी नहीं मिलेगी. जब भी सिचुएशन रेगुलराइज हो जाएगा, जब भी सिचुएशन नॉर्मल हो जाएगा या सारा रॉ मटेरियल हमारे पास आएगा, प्रोजेक्ट्स हमारे पास आएंगे, तो हम आपको पहले प्रायोरिटी पे अपने कंपनीज में ले लेंगे. दैट इज सेट टू बी योर ले ऑफ. In layoff, the employees can come back to the organization once the things come to the normalcy. लेकिन in retrenchment, the employees will not come to the organization again. क्लोजर में कंपनी पूरी तरह से बंद हो जाती है. Okay, that is the difference between retrenchment and layoff. Layoff is temporary. Layoff आपको temporary suspension के लिए होता है, wherein retrenchment it is a permanent removal of the employees from the companies. Then you have hours of work. Hours of work is something like how much stipulated time of working hours should be followed by the employees in an organization. Would be 8 hours, would be 9 hours. Okay, उसके बियॉन्ड जो भी आप काम करोगे उसको हम लोग ओवर टाइम बोलेंगे. ओवर टाइम शुड बी गिवन टू द एम्प्लॉयज द नंबर ऑफ वर्क आवर्स दे डू. फॉर एग्जाम्पल, मेरे 8 घंटे की शिफ्ट है और मैंने 12 घंटा काम किया, तो ऊपर के जो 4 घंटे रहेंगे वो मेरे ओवर टाइम रहेंगे. तो यू विल गेट 50 रुपीज एक्स्ट्रा. ओके, फॉर पर आवर. तो पर आवर आपको 50 रुपया मिलेगा. अगर आपने हर 12 घंटा काम किया तो आपको 200 रुपया एक दिन का मिलेगा. सो फिर 200 into 30 days. तो वट एवर अमाउंट विल बी कमिंग दैट इज सेट टू बी इन योर ओवर टाइम. सो इस पे भी डिस्प्यूट होते हैं. कंपनीज ओवर टाइम तो करा लेती है, लेकिन उनको अच्छा सा सैलरी में वो ओवर टाइम ऐड होके नहीं आता. So hours of work is also a biggest issues in an organizations. Then leaves. Leaves, you have casual leave, you have medical leaves, you have 2 to 3 types of the leaves. ऑर्गेनाइजेशंस लोगों को छुट्टी नहीं देती. जब भी छुट्टी की ज़रूरत होती है, देयर इज अ मेडिकल इमरजेंसी, या घर पे कोई फंक्शन है, शादी है, त्योहार है, यू नीड सम leaves to go to your native place, some to do ritual works, whatever xyz reasons are there, and your leave is not granted. तो ऐसे टाइम पे डिस्प्यूट होना बहुत संभावित चीज है.
and you can see there's a huge amount of dispute occurs in an organization when the leaves is not granted to the employees. That's a problem. Then you have, and maximum leaves which happens in company, it is without pay. ज़्यादा करके आपको टोटल आई गेस इन टोटल यू गेट 30 और 28 लीव्स इन एन ईयर. ओके, उसमें से कुछ आपके 12 या 15 आपके कैजुअल लीव्स होते हैं, 7 या 8 आपके मेडिकल लीव्स होते हैं, और ऊपर से 7 या 8 आपके व्हाट यू से हाफ डे लीव्स यू कैन से. सो ऐसे आपके 30 या 28 डिपेंड्स अपॉन कंपनी पॉलिसी आपके लीव्स डिस्क्राइब किए जाते हैं. एंड some companies tell that कि हाँ आपको विद पे मिलेगा, पर विदाउट पे वो लोग देते हैं. तो दिस इज हैपेंस इन अ कंपनी. बहुत सारे ifs and buts होते हैं, दिखाने के दांत अलग होते हैं और खाने के दांत भी अलग होते हैं. तो लीव्स के वजह से भी बहुत सारे डिस्प्यूट्स कंपनीज में देखे जाते हैं. Indiscipline and violence. Indiscipline happens in company, especially when you can see there is a dispute between two parties or employees in an organization. Okay, dispute जब भी होता है, indiscipline, you can see highest percentage of the time loss due to all dispute occurs in an organization. Violence is one of the major cause due to which the company face bigger issues. So indiscipline and violence के वजह से dispute create होता है. Then you have management practices. Management practices ऐसा अभी हर जगह पे you can see the political scenario. मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस में भी क्या होता है कि whenever you have union in an organization, the management make sure that कि हम आपको पहचानते ही नहीं. They are not really want to recognize you. They do not want to recognize you and they consume time. हम आपको पहचानते नहीं, एंड दे डू द गुड अमाउंट ऑफ डिले. ओके, रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर जो भी होता है ट्रेड यूनियन का, उनको वेरीफाई करने में टाइम पास कर देते हैं. या तो फिर क्या करते हैं, वेन एवर देर इज अ ट्रेड यूनियन, दे फोर्स देम कि यू ज्वाइन द मैनेजमेंट यूनियन. आप एम्प्लॉयज की तरफ से बात करेंगे लेकिन काम हमारा करेंगे. सो दिस काइंड ऑफ मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस ऑलवेज कैन बी सीन. आपने मूवीज वगैरह में भी देखा होगा कि दिखाने के लिए एम्प्लॉयज की साइड से होते हैं लेकिन काम सब मैनेजमेंट का करते हैं. दिस इज ऑल game plan happens because of the union, because of the union peoples of the representative which do their work on the basis of the management. So this is all due to these management practices happens in an organization. ट्रेड यूनियन भी मेजर कॉज ऑफ डिस्प्यूट होता है, बिकॉज इफ there's a 2 or 3 different union are there, so management take an advantage of this, and they will represent or they will choose the trade union in which they have their own peoples. Okay, so multiplicity of trade union के वजह से भी the company always face problem. Employees face an issues in an organization. So trade union form करने के लिए you don't want major portion of the employee, you just require 7 peoples. 7 peoples or 7 employee in an organization can form a trade union. So if you have more than one trade union in an organization, the company will face a big issue and the dispute happens. Legal and political factors. Legal factors, as I said earlier, कि if there is a more than one law, a labor law or a political factors are involved in an organization. I have given the example of the promotion which happens in 2018 on the basis of the old norms, and in 2019 there's a new norm enacted due to which I got demotion. So it is not right. I got promoted on the basis of 2018 rules and regulations. So how you can demote me on 2019 ka rules and regulations? So these are the legal and the political factor due to which you can see a huge amount of fights, a huge amount of disputes in an organization. So legal and political factors can always been seen. और इसके वजह से क्या होता है कि यू कैन सी ह्यूज अमाउंट ऑफ स्ट्राइक्स, घेराव और बर्न्स इन अ कंपनी. ओके,
इसके अलावा there is a miscellaneous cost. You can see in miscellaneous cost there is a inter and intra rivalry. Inter and intra rivalry का मतलब inter मतलब between two trade unions, intra मतलब within the trade unions, characters of a demand, standing orders, non implementation of the agreements and award, workload, unsafe and poor working conditions. These are the reasons which comes under your miscellaneous causes. Understood the economical causes and non-economical causes. Any doubt in this? No, sir. No, sir. Okay, easy to clear, easy to understand. Yes, sir. Yes, sir. Okay, cool. So we'll move forward with the types of industrial dispute. Okay, in an employment relationship, a dispute is an disagreement or a conflict between an employees and their employer over issues such as discipline in the workplace, management style, wages, dismissal, or the other grievances which happens in an organization. So industrial labor organization, that is ILO, okay, has divided the dispute in two part: interest dispute and grievance or right dispute. So when you talk about like economic dispute, it is said to be an industrial disputes. Okay, industrial disputes is more importantly, just a moment, So when you talk about like industrial dispute will come under your layoff, claims of wages, bonuses, job securities, and fringe benefits. Now, what do you mean by the grievance or a right dispute? What is grievance? Anyone can just tell what is grievance? ग्रीवेंस का क्या मतलब होता है? Sir, problems faced by the employees or employers. Okay, the problem faced by maximum by the employees. Okay, जो Yes, जो sir. प्रॉब्लम फेस होता है एम्प्लॉयज को, वो ग्रीवेंस होता है. राइट डिस्प्यूट मतलब जो आपकी हक की लड़ाई जो होती है, it is your right that's said to be in your right dispute. For example, if you are entitled to get the bonuses in coming year, so it is your right, you should get that bonuses. If you are entitled to get the promotion based on your seniority, it is your right to get that promotion. अगर आपको वो प्रमोशन नहीं मिलता है तो आप लोग ग्रीवेंस में वो केस डाल सकते हो. So grievance will go through the case, they will study the case, and within the 45 days the grievance will the company will try to solve the grievance of an employee. So payment of wages, other fresh benefits, working condition, overtime, seniority, promotion, demotion, dismissal, discipline, transfer, this will all example comes under your grievance or a right dispute. Okay. Now, these are the various consequences or effects of the industrial dispute you can see. Loss of production. Now, how the loss of production will happen? एक झगड़े Sir, के वजह से प्रोडक्शन का नुकसान कैसे होगा? sir, if there will be dispute, then the production will stop. अगर production stop हो जाएगा तो company will face losses. Right? See, if the company want to earn profit, they really want to earn good amount of profit, they want to reduce the wastages. उनका सबसे important काम होता है to do the continuous productions. Whenever the company will do the continuous production, the company will reduce the wastages in an organizations and they can earn good amount of profit.
अगर अच्छा खासा प्रोडक्शन कंपनी नहीं करती है तो कंपनी really has to face a production problem. So if the dispute occurs in an organization, so employees will stop working, the employees will not work properly, employees will not give their 100% and there will not be an output. So the loss of production will always there. अगर एम्प्लॉयज टाइम पे ऑफिस में नहीं आएंगे, काम नहीं करेंगे, तो अच्छा खासा यहाँ पे नुकसान हो जाएगा. ड्यू टू विच यू कैन ऑलवेज हैव अ लॉस ऑफ प्रोडक्शन. जहाँ पे हम लोग एक दिन में 5,000 प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते थे, ड्यू टू डिस्प्यूट बिटवीन एम्प्लॉयर एंड द एम्प्लॉयज इट माइट गो डाउन, it might go around 2,000, 3,000, 1,000, 1,500, whatever production will come in the entire day वो आएगा. सो डिस्प्यूट के वजह से प्रोडक्शन का नुकसान होता है. लॉस ऑफ जीडीपी ड्यू टू लो प्रोडक्शन, द डिमांड विल बी रिड्यूस. अगर डिमांड रिड्यूस हुआ तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ते जाएगा. अभी देखो, ड्यू टू दिस पैंडेमिक, ड्यू टू कोविड-19, ह्यूज अमाउंट ऑफ कंपनीज हैव नॉट गिवन ऑर्डर. अगर बाहर से ऑर्डर नहीं आएगा तो कंपनी का मैन्युफैक्चर करके करेगी क्या? एक्सपोर्ट ही नहीं होगा माल, बाहर जाके बिकेगा नहीं माल, तो कंपनी के कंट्री के अंदर पैसा कहाँ से आएगा? अगर कंट्री के अंदर पैसा नहीं आएगा तो कंपनी माल बनाएगी कैसे और लोगों को सैलरी देगी कहाँ से? अगर सैलरी नहीं दे पाएंगे तो उनको काम से निकलना ही पड़ेगा एंड दे हैव टू रिमूव द employees from the organization, due to which this all they can see a low of GDP. That's a bigger issues in a problem. Then you have unrest and tension. Now what is unrest and tension? Unrest and tension क्यों? अगर कंपनी में झगड़ा होगा तो there will be a tension in the hearts and minds of the people, right? Whenever there is a dispute, अगर आपके घर पे भी थोड़ा सा झगड़ा होता है, आपका आपके मॉम के साथ में या आपके फादर या मदर का थोड़ा डिस्प्यूट हो जाता है, तो यू कैन सी ना देयर इज अ टेंस एनवायरनमेंट या टेंस कल्चर एट योर होम. सो अगले 2-4 दिन आपके घर का माहौल थोड़ा सा बिगड़ा हुआ रहता है. This is all comes under your unrest and tension. So whenever there's a dispute occur in an organization, you can always see that. You can always see that there's a no proper working conditions. Is there is no proper output is there. Office का पूरा माहौल change हो जाता है. Due to which it is not good for a company. Okay. Economic loss. Yes, you have an economic loss. Whenever dispute are there, you might see strike, you might see lockdown, you might see घेराव, you might see बंस. तो इकोनॉमिक लॉस का बहुत सारा चांसेस होता है. इकोनॉमिक डिप्रेशन. व्हाट इज इकोनॉमिक डिप्रेशन? what is the economic depression? Anyone can tell economic depression? ओके, इकोनॉमिक डिप्रेशन का मतलब होता है कि every company cannot do the business alone, so they have to depend on the other industries as well. For example, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में जो भी गाड़ियां बनती हैं, वो गाड़ियां के सारे पार्ट्स एक ही जगह पे नहीं बनते. Might be Maruti would be manufacturing the engine and the outer body, लेकिन अंदर का interior will be come from different company, seat will come from different company, music system might become from different company, tires may become from different company, nuts and bolts might become from different company, batteries will come from different companies. So these are the factors. सो अगर एक कंपनी का इशू होता है तो इट हैज एन इंटर कनेक्टिविटी विद द अदर इंडस्ट्रीज एज वेल. तो अगर मारुति का प्रोडक्शन बंद हो जाता है तो इट हैज अ कॉन्सिक्वेंस इफेक्ट्स ऑन द अदर इंडस्ट्रीज एज वेल. म्यूजिक सिस्टम्स का ऑर्डर नहीं आएगा, टायर्स का ऑर्डर नहीं आएगा, ओके, नट्स एंड बोल्ट्स का ऑर्डर नहीं आएगा, विंडशील्ड्स का ऑर्डर नहीं आएगा. सो इट इज समथिंग लाइक इट हैज अ सर्कल, इट हैज अ सर्किट कि it is all it can affect drastically to the other industries as well. So economic depressions भी होता है.
Impact on employees, you can always see the impact on employees, because many families, a single person who goes out and do the work, a single bread earning person, okay, who earn the food, who earn the money, and the entire family survives on that single person. अगर अभी ये कोविड में भी आप देख लो, many people have lost their jobs, and they are the single person who was working in an organization. So एक बंदा जो काम करता था, उसके बलबूते पे पूरी फैमिली डिपेंड थी, अगर उसका ही जॉब चला जाएगा, तो how the family will survive? It is not so easy to survive. The family will have to see huge problem, okay, उनके बहुत सारे problems issues रहेंगे. So impact on employees will always be there. Then threat to peace and security. So there's always, you can see कि you will all the conflict which goes out of hand, there's a threat to a peace, whatever peace and security happens, okay. जैसे मारुति सुजुकी का एक एग्जांपल आप ले सकते हो कि there's a huge conflict happens long back, अभी मेरे ख्याल से उसको 9 या 10 साल हो चुके रहेंगे, जहाँ पे एचआर मैनेजर को जिंदा वो लोगों ने जला दिया था गुड़गांव प्लांट में, मारुति के प्लांट में, अगर आपने न्यूज पढ़ा होगा या तो आप गो थ्रू कर सकते हो, ओके. इट वाज द बिगेस्ट केस स्टडी. There's a dispute between the management and the employees, where the management did not accept it, or they have some conflict on some of the issues, okay, on demands, okay, and due to which the company could not able to accept the demand what the employees were asking, and there's a fight with an HR person, and they took the revenge with the HR person. Both, I guess, morning shift and the afternoon shift people come together, and they beaten the HR person, and they has burned the HR person alive. So due to which there's a threat to the peace and security of a person as well. Okay. Then you have an inflation. There's a huge inflation rate is there nowadays in a market. I guess 6% या 7% का inflation rate चल रहा है, तो inflation बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, and we are not able to keep savings with us, we are not able to save money for a future. So there's always the issues happening in the organizations. So अगर dispute रहेंगे companies में और inflation बढ़ता जाएगा, तो गुड्स के प्राइस भी बढ़ेंगे सर, गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइस बढ़ेंगे. गुड्स एंड सर्विसेज प्राइस बढ़ेंगे तो लोग परचेस नहीं करेंगे तो पैसा कंट्री में नहीं आएगा, तो जीडीपी विल नॉट अगेन will come to up to the mark. So this all will come, and there's always a face a problem whenever there's a dispute happens in an organizations. Understood this point? Loss of production, lost GDP, unrest and tension, economic loss, economic depression, impact on employees, threat to peace and security, and inflation. Yes, sir. Girls, Yes, sir. okay. Yes, sir. सो दिस इज द इन डिटेल, ये हमने पॉइंट में डाला हुआ, ये सारा चीज यहाँ पे इन डिटेल मैंने लिखे रखा है. अगर अगर आपको बुक्स पढ़ने का टाइम नहीं मिले आगे जाके, तो आप लोग यहाँ पे भी पढ़ सकते हो. ओके. नाउ देर इज अ मेथड्स ऑफ सेटलिंग द डिस्प्यूट. जब भी आपके फ्रेंड्स के बीच में भी झगड़ा होता है, तो आप झगड़ा सॉल्व करने की कोशिश करते हो कि नहीं करते हो? whenever Yes. there's a dispute between a friend, okay, आपके दो बेस्ट फ्रेंड्स के बीच में या आपके ग्रुप में झगड़े होते हैं, तो आप वो झगड़ा मिटाने की कोशिश करते हो ना? करते यू सर. मेक यू मेक श्योर कि बस सुलह हो जाए, अच्छे से कोई प्रॉब्लम ना होना चाहिए, ऐसा आप ट्राई करते हो. Similarly, whenever there is a issues, whenever there is a dispute happens in companies, the government try and enter in the situation and try to settle the dispute which happens with the people. So this is the various methods. First is arbitration. What is arbitration? What is arbitration?
नथिंग, पहली बार सारे वर्ड्स पहली बार सुने रहेंगे आप लोग। आर्बिट्रेशन, जॉइंट कंसल्टेशन, वर्क्स नहीं कमेटी। सर, वर्ड्स तो सुने लेकिन वो सेकंड टर्म में पढ़ा था बट याद नहीं, ओ उसका ठीक है, नो मीनिंग याद नहीं। चलेगा। सी, आर्बिट्रेशन इज नन अदर देन द थर्ड पार्टी. It is a neutral party who plays an role of a mediator, or you can say arbitrator. Okay, वो ना एम्प्लॉय का होता है ना ही एम्प्लॉयर का होता है. He is a neutral person. He sit with both the parties. He listen to both the parties in a proper way, and he gives his judgment. वो दोनों पार्टी के सलाह मशवरा करता है, वो दोनों पार्टी के प्रॉब्लम सुनता है, समझता है, और दोनों के प्रॉब्लम समझने के बाद ही give his judgment. Okay, and the judgment is binded to both the parties. वो दोनों ही पार्टीज पे वो बाइंडिंग होता है. जजमेंट जो भी आएगा वो आर्बिट्रेटर को 30 डेज के अंदर सबमिट करना होता है, एंड आफ्टर 30 डेज इट विल गेट पब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट, एंड इट इज एनफोर्स ऑन बोथ द पार्टीज. उसको हम लोग बोलेंगे आर्बिट्रेशन. नाउ देयर आर टू काइंड्स ऑफ आर्बिट्रेशन आर देयर. एक तो होता है वॉलेंट्री आर्बिट्रेशन, और दूसरा होता है कंपल्सरी आर्बिट्रेशन. In voluntary arbitration, it is on the person, on the parties to accept that judgment or not. Okay, but in compulsory arbitration, it is enforced कि they have to accept that binding. जो भी dispute का binding होगा, then they have to accept. यहाँ पे वॉलेंटरी में क्या होता है कि आर्बिट्रेशन सक्सेसफुल, जो भी जजमेंट देगा वो सक्सेसफुल इम्प्लीमेंट होगा नहीं होगा वो तो बात की बात है. लेकिन कंपलसरी में कैसा होता है कि अगर आपको आपके फेवर में रहा तो ठीक है, लेकिन अगर आपके फेवर में नहीं रहा तो भी आपको वो एक्सेप्ट करना है. दैट्स कम अंडर योर कंपलसरी आर्बिट्रेशन. एंड वॉलेंट्री आर्बिट्रेशन में इट इज ऑन द डिस्प्यूटेड पार्टी कि उसको एक्सेप्ट करना है कि नहीं करना है. ओके, बट द आर्बिट्रेटर जो थर्ड पर्सन होता है, हु इज अ न्यूट्रल गाय, he will give his report within 30 days, and after 30 days the government will publish that report, and it is binding on both the parties. Second, joint consultation. Joint consultation is very much what you say, it is working practically in industry. Joint consultation का मतलब होता है where the employer and the employee sit together. Okay, might be the employee's representative or the employer representative will sit together. They will discuss on various demands and supplies in an organization, and they will work. Okay, even the organization will ask the participation of worker in decision making. जॉइंट कंसल्टेशन में क्या होता है कि जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, जो भी इश्यूज रहते हैं, मैटर्स रहते हैं, वो सारे मैटर्स को लेके दे डू गुड अमाउंट ऑफ डिस्कशन. द एम्प्लॉयज इज ऑल्सो गिवन अ अपॉर्चुनिटी टू गिव देयर एडवाइस, टू गिव देयर सजेशंस, एंड उनको भी डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्वमेंट करते हैं. तो अगर डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्वमेंट किया आपको, तो यहाँ पे इश्यूज होने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं. दैट इज कम अंडर योर जॉइंट कंसल्टेशंस. आर्बिट्रेशन में देयर इज अ थर्ड पार्टी और अ न्यूट्रल पार्टी will come in between the employer and the employee, and they will give their judgment. In joint consultation, the employer representative and the employee representative will sit together. They will discuss onto the conflicting matters, and the employer will give an opportunity to the employee representative to take the decisions or give their advice or suggestions. So there's an involvement of decision making from the employees, so there is a less opportunity of conflicts. उसको हम लोग बोलेंगे joint consultation. Third, it's a works committee. So works committee is also a works committee is consisting of a representative of a management and the employee for every 100 employees. हर 100 employees या उससे ज्यादा employees रहेंगे तो एक वर्क्स कमेटी फॉर्म होती है, who is a representative
from the who will becoming a preserving amity and a good relation between the employer and the workman. This committee will try to remove the problems. This committee will try and remove the issues which happened between the employer and the employee, and they'll try to make sure that they will reduce the issues in an organization. So negotiation कितना बेहतर होगा, negotiation कितना अच्छा होगा, that is the responsibility of the work committee. So every 100 employees or more employees in an organization, they will form a works committee who are the representative of the employer and the employees, and they will work together to find a solution. Fourth is conciliation. Conciliation is none other than your mediator. It is as same as your arbitration. See, arbitration, conciliation and adjudication जो आपका लास्ट पॉइंट है, ये तीनों भी सेम ही हैं. Mediator, it is again the third party, a third party who will come in an agreement, who try to do a good amount of mutual discussion between the employee and the employer. Okay, he try to find out the alternative solutions. Okay, he is a third person, maybe from an individual or a group of people. वो कोई भी हो सकता है, he could be a third person, but he is a mediator. And again he will try to remove the problems, he will try to remove the differences which happens in an organizations. Okay, that's come under your conciliation. Last you have adjudication. Adjudication is again is as similar as your arbitration. It is little bit a legal procedure. A legal process से government adjudication करेगा. They will resolve the problem, they will resolve the issues with or without the consent of the disputing party. अगर आपका issue है तो हम लोग उसको solve करेंगे आपके या आपके कंसेंट के बिना. अगर आपका कंसेंट होगा तो इट विल बी अ वॉलेंट्री आर्बिट्रेशन और वॉलेंट्री एडजुडिकेशन. अगर आपका कंसेंट नहीं हो गया तो इट इज विदाउट योर कंसेंट, और यू कैन से इट इज अ कंपल्सरी एडजुडिकेशन. So you had to enforce, it is forcibly it will we will force on you, it will enact on you कि आपको ये follow करना ही है. You don't have any choice whenever government do a compulsory adjudications. This is one of the most important question of your paper. 1001 टक्का ये आपके क्वेश्चन पेपर में आएगा. अगर आपको 75 मार्क्स का पेपर लिखने का अपॉर्चुनिटी मिला या तब तक कोविड का सिचुएशन कम होता है और ये सारा फैक्टर्स कम हो जाएगा, तो आपको ये वाला क्वेश्चन आना ही है, ये आपको क्वेश्चन आएगा. ओके, अंडरस्टूड? हेलो हेलो. Yes, sir. Yes, sir. हाँ तो रिस्पॉन्स करो ना यार कुछ तो. Yes, sir. यस, तो ये वाला आपको क्वेश्चन आना ही है. तो यू अंडरस्टूड आर्बिट्रेशन, जॉइंट कंसल्टेशन, वर्क्स कमेटी, कंसिलिएशन एंड एडजुडिकेशन. एक बार याद रखना, आर्बिट्रेशन में, कंसिलिएशन और एडजुडिकेशन में एक न्यूट्रल पार्टी अपॉइंट होती है जो दोनों को बेसिकली बिठा के सलाह मशवरा करके ट्राई टू फाइंड आउट अ सॉल्यूशन. And in that it will have a two part, that is your voluntary arbitration या voluntary conciliation या voluntary adjudication, या तो फिर compulsory arbitration, compulsory conciliation या compulsory adjudication. ओके, जॉइंट कंसल्टेशन में यहाँ पे एम्प्लॉयर रिप्रेजेंटेटिव और एम्प्लॉय रिप्रेजेंटेटिव विल सिट टुगेदर. The employees will get an opportunity to take part in decision forming. Whenever the decisions are formed in an organization, वहां पे एम्प्लॉयज को अपॉर्चुनिटीज मिलता है टू टेक पार्ट इन डिसीजन मेकिंग. ओके, and in works committee, the committee is formed for every 100 employees or more. ओके, यहाँ पर भी आपके एम्प्लॉय रिप्रेजेंटेटिव होते हैं जो आपके वर्क्स कमेटी फॉर्म होते हैं टू रिजॉल्व द डिस्प्यूट. अंडरस्टूड? Yes, sir.
Okay. Yes, sir. So we'll move forward with the concept relating to the industrial dispute. Whenever an industrial dispute occurs, both the management and worker try to pressurize each other. The management may resort to lockout, layoff, and other workers may resort to strike, घેराव and picketing. तो यहाँ पे हर तरह के अलग अलग डिस्प्यूट्स यहाँ पे दिखाए गए हैं. तो विल गो वन बाय वन. विल गो फॉर फर्स्ट स्ट्राइक. Now, first you have an economic strike. What is economic strike? What is economic strike? Anyone can just tell. बोलो. Come on, हमने अभी So, इतना स्लाइड्स किया ना इकोनॉमिक स्ट्राइक के बारे में. sir, economic strike matlab it affects the economic condition or financial condition of the organization. नहीं. इकोनॉमिक स्ट्राइक का मतलब होता है इकोनॉमिक कॉसेस, योर वेजेस, सैलरी, हाँ, बोनसेस, फ्रिज बेनिफिट्स. जो स्ट्राइक आपके पैसे का लेके होता है उसको हम लोग इकोनॉमिक स्ट्राइक्स बोलते हैं. अगर आपको पैसा okay ही sir. नहीं मिला, बोनसेस नहीं मिला, तो चलेगा आपको? नहीं sir. नहीं चलेगा ना. तो आपको अच्छा खासा सैलरी तो चाहिए मंथ के आखिर में. Yes sir. तो दैट्स whenever the employees do a strike because of this wages, salary, bonuses, उसको हम लोग economic strikes बोलते हैं. Okay. Hmm. Second, you have sympathetic strike. Sympathetic strike का मतलब होता है कि when the members of other union do the strike and the other people who give the sympathy, they support them, they express their support, उसको हम लोग बोलेंगे sympathy strike. भाई तू strike कर रहा है तो मेरा पूरा support तुझे रहेगा, मेरी पूरी सिंपति तेरे साथ रहेगी, जो जो तू डिमांड कर रहा है हम लोग का पूरा सपोर्ट तेरे साथ रहेगा. दैट इज सेड टू बी योर सिंपैथिक स्ट्राइक. Okay थर्ड, यू sir. हैव अ जनरल स्ट्राइक. जनरल स्ट्राइक का मतलब होता है कि नॉर्मल स्ट्राइक अक्रॉस इंडस्ट्री. फॉर एग्जांपल, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का स्ट्राइक है तो इट विल बी अक्रॉस इंडस्ट्री. मतलब इट वुड बी मारुति, इट वुड बी टोयोटा, इट वुड बी निसान, इट वुड बी रेनॉल्ड, इट वुड बी महिंद्रा, इट वुड बी टाटा, कोई भी कंपनी हो जाए. द एम्प्लॉयज हैव कंडक्टेड स्ट्राइक अक्रॉस इंडस्ट्री. उसको हम लोग बोलेंगे जनरल स्ट्राइक. ओके. तो उसमें ऐसा ये नहीं कि स्पेसिफिक वगैरह होता है, बट इट इज एक्सटेंशन ऑफ योर सिंपैथिक स्ट्राइक. देन यू हैव सिट डाउन स्ट्राइक. सिट डाउन स्ट्राइक को हम लोग इजी टर्म में बोलेंगे पेन डाउन स्ट्राइक. पेन डाउन या सिट डाउन का मतलब होता है the employees will come to the office on regular timing but they will not do a single work in an organization. वो लोग ऑफिस में मॉर्निंग को आएंगे 10, 10:30, 9, 9:30, वॉट एवर टाइमिंग इज देयर, बट दे विल नॉट डू देयर वर्क. They will sit on their table and they will just wait to complete their working hours and they will not do the work. That is said by your sit down strike or a pen down strike. Okay, पेन जो आप लिखते हो ना पेन हाथ से, उसको बोलेंगे पेन डाउन स्ट्राइक. Okay. Yes sir. Then Okay you sir. have a slowdown strike. Slowdown strike is something like the people will come to the office on a regular timing, but they will not give you the output. They will not give whatever output is required. They will not work as per the output is required. अगर उनका output है 2000 units per hour, तो वो आराम से काम करेंगे, अपने प्रेफरेंस के हिसाब से काम करेंगे, या तो अपने हिसाब से काम करेंगे. दैट विल सेट टू बी इन योर स्लो डाउन स्ट्राइक्स. ओके. Then you have layoff. Layoff is what we have discussed earlier as well. Whenever there is a what you say, company don't have, one second, इसके बाद okay, layoff we have. Okay, layoff
is temporary suspension of an employee from an organization due to unavailability of the funds, unavailability of the raw materials, या काम नहीं है, प्रोजेक्ट नहीं है, पैसा नहीं है, सो कंपनी कैन नॉट अफोर्ड टू गिव सैलरीज टू द एम्प्लॉयज, उसको हम लोग बोलेंगे ले ऑफ। जैसे ही सिचुएशंस नॉर्मल होती है और हमारे पास काम आता है तो हम आपको वापस जॉब पे बुला लेंगे, दैट इज सेड टू बी इन योर ले ऑफ। लॉकआउट, लॉकआउट में इट्स अ परमानेंट क्लोजर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, परमानेंटली कंपनी को बंद कर देते हैं, उसको ताला लगा देते हैं, उसको हम लोग बोलेंगे लॉकआउट। ओके, दैट इज सेट टू बी योर लॉकआउट। तो यहाँ पे कंपनी परमानेंटली बंद हो गई बिकॉज एम्प्लॉयज पुट लॉट्स ऑफ प्रेशर ऑन द मैनेजमेंट या एम्प्लॉयर, इन पे प्रेशर डालने के बाद सारा चीज वो करते हैं, और एम्प्लॉयर डू नॉट हैव एनी अदर ऑप्शन रादर देन लॉकिंग आउट द ऑर्गेनाइजेशन, उसको हम लोग बोलेंगे लॉकआउट। Then last is retrenchment. Retrenchment is none other than again removing of the employees from the employment without, with or without the consent of the employees, or with or without the notification। कोई भी तरह का नोटिफिकेशन के बिना भी एम्प्लॉयज को काम से निकाल देंगे, ओके, उनको वापस सर्विसेज पे नहीं लेंगे, दैट इज सेड टू बी न्यूअर रिट्रेंचमेंट। अंडरस्टूड? Yes, sir. Yes, ये sir. भी आपके पेपर में 1001 टक्का आपके पेपर में आएगा। ओके, देन यू हैव एम्प्लॉय डिसिप्लिन। नाउ व्हाट इज एम्प्लॉय डिसिप्लिन? व्हाट इज एम्प्लॉय डिसिप्लिन? Sir, rules and regulations to be followed by employees. रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलोड बाय द एम्प्लॉयज, ओके। और एनीथिंग एल्स? Why the rules and regulations that needs to be followed by the employees in an organization? डिसिप्लिन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? Why discipline is important? उनके परफॉर्मेंस के लिए। उनके परफॉर्मेंस के लिए, Sir, ओके। sir, because if the employees will not be disciplined, then it will affect the smooth working of the organization. अगर हर एम्प्लॉय अपने हिसाब से ही काम करेगा तो फिर कंपनी चल नहीं पाएगी ना। एग्जैक्टली, अगर हर एक एम्प्लॉय अपने हिसाब से काम करेगी तो सब लोग अपने हिसाब से आएंगे, अपने हिसाब से जाएंगे, काम किया किया, नहीं किया नहीं किया, ऐसा हो जाएगा। तो इट इज नॉट एक्सेप्टेबल इन एन ऑर्गेनाइजेशन। इफ company has to grow in a proper way, so proper employee discipline should be there in an organization. For that, a strict rules and regulations, yeah, procedure needs to be made by the company so that it has to be followed by every person. So it is most important that कि जो भी rules regulations form होते हैं वो सारे rules regulations form करके it needs to be organized in a proper way so that every employee can follow that. If the discipline is followed in a proper way, the company can do good amount of productivity, the company can increase the production, and it will increase the production with the help of good, effective and efficient way, okay। अगर अगर किसी भी तरह का abstention हुआ in discipline, it might lead to create good amount of chaos, secondly confusion, sometime corruption या disobedience in an organization। तो confusion भी create हो सकता है, chaos भी create हो सकता है, corruption भी companies के अंदर हो सकते हैं, या disobedience भी हो सकता है। So employee discipline is one of the important factor, okay। Yes, Discipline sir. means systematically conducting the business by the organization members who strictly adhere to the essential rules and regulations. These employees work together as a team
so as to achieve the organizational mission as well as vision, and believe in maintaining a sync between the individual and group. Discipline implies conforming with a code of conduct established by the organization. Discipline in an organization ensures a productivity and efficiency. It encourages harmony and cooperation among employees as well as a moral booster for the employees. In absence of discipline, there will be a chaos, confusion, corruption, and disobedience in an organization. This is the definition of employee discipline. Employee discipline defined as the regulation or condition that are imposed on employees by management in order to either correct or prevent behavior that are detrimental to an organization. Okay, this is most important. It is one of the employee discipline that can be followed. In short, discipline implies obedience, orderliness, and maintenance of proper subordination among employees, work recognition, fair, equitable treatment among employees, appropriate salary structure, effective grievance handling, and job security all contribute to the organization's discipline. So there are various determinants of employee disciplines are also there. First, you have training. So proper training, अगर कंपनी में अच्छा खासा डिसिप्लिन होना चाहिए, तो सबसे पहला काम होता है कि you should always give good amount of training to the employees. There should be always a workshop, you can say a conference, you can say expert talks. A training should be conducted so the employees should understand what are the various disciplines are there. So training is very much important. Second, right hiring. Right hiring plays a very crucial role. आपने सेकेंड ईयर में पढ़ा था रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, उसमें भी राइट हायरिंग था. what happens if there is a wrong hiring in an organization? अगर आपने गलत बंदे को रिक्रूट किया तो the company has to face a huge loss, because the it whenever you hire a person you give a package to that person, 5 लाख 7 lakhs a year, तो जो भी आपके महीने के 50,000 है या 45,000 है, that entire money that entire money is a loss for an organization because you have done the wrong recruitment. So wrong Yes. recruitment will not help to the organization. So whenever you do good amount of recruitment in companies, you make sure that there's a right hiring, right person for right job. You have an opening for a marketing department, so you should need a person who is qualified, who has an education background in a marketing stream. If you have an opening of a finance or a business analyst in a finance, you need a person who can do, who has qualified, who has a qualification or education qualification in finance as well. So right hiring is important, वरना क्या होगा कि आपका काम ढंग से नहीं होगा. थर्ड, यू हैव ओरिएंटेशन एंड इंडक्शन. जो आपका भी ओरिएंटेशन इंडक्शन कंपनी बीएमएस में हुआ था जब आपने बीएमएस फर्स्ट ईयर ज्वाइन किया था. Why there's a orientation and induction is required in a company? Because the new person or a fresh blood which comes in a organization, he needs to know what are the departments are working in these organizations, what are the goods and services are manufactured in this organization, who is the HOD, who is the vice president, who is the general manager, which department locates at which area, whom to contact. Okay, what is the hierarchy, how the working conditions are there, number of hours, facilities, transportation, canteen facilities, what are the various things are available on the campus. It all you need to know. For that, it is more important that the orientation and induction is kept. Secondly, what are the rules and regulations you need to follow? A new employee is need to follow is also instructed at the orientation program. जो जो आपके रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, जो आपको फॉलो करने होते हैं, वो भी सारे आपको ओरिएंटेशन प्रोग्राम में बताए जाते हैं. When is your morning time? तो रिपोर्टिंग टाइम इन अ कंपनी वुड बी 9 o'clock. सो आपको शार्प 9 o'clock को आपके ऑफिस में आना है. 3 late marks, you will lose your 1 salary.
आपको एक दिन की सैलरी कट किया जाएगा. तो there's a various norms can be formed which needs to be explained or communicated to the employees. So orientation and induction is important. Creating a disciplined working environment. Working environment needs to be created in an organization. There should be a clear transparency कि अगर आप गलती करोगे तो आपको पेनल्टी मिलेगा, आपको पनिशमेंट मिलेगा. सो क्रिएटिंग दैट डिसिप्लिन वर्किंग एनवायरनमेंट वहां पे होना चाहिए. यू हैव वर्कफोर्स ऑफ अराउंड 100 पीपल्स एट वन फ्लोर, तो वो सारे लोगों को वो सारे डिसिप्लिन को फॉलो करना मैंडेटरी होता है. इट इज नॉट कि एक बंदे को अलग डिसिप्लिन है, दूसरे बंदे को अलग डिसिप्लिन, ऐसा नहीं है. It should be clear and transparent. Okay, it is the, यहाँ पे भी कैसा है कि employees also can express their opinion कि how peacefully they can work in an organization. That is more important. Then framing the proper procedures. If the discipline is made, it needs to be framed in a proper way. What is the procedure that needs to be followed if the discipline is there in an organization? So discipline जो भी होगा, that needs to be followed in a proper way. सेंट्रलाइजेशन ऑफ डिसिप्लिन. सेंट्रल डिसिप्लिन मतलब होता है कि डिसिप्लिन के ऊपर कुछ भी नहीं है. अगर आप बड़े हो छोटे हो, वॉट एवर यू आर देयर, यू आर अ पार्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन एंड यू हैव टू बी स्ट्रिक्टली फॉलो द डिसिप्लिन. आप वीपी हो जाओ या जीएम हो जाओ या एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हो जाओ या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हो जाओ या नॉर्मल एम्प्लॉय, you are entitled to follow the everything. You need to follow the rules and regulations of an organization and it is centralized. जो एक नीचे वाले बंदे को रूल्स फॉलो होगा, वही रूल आपको भी फॉलो होगा. सो इट इज सेंट्रलाइज. द नेक्स्ट यू हैव इम्पर्सनल डिसिप्लिन. इम्पर्सनल डिसिप्लिन का मतलब होता है कि मैं किसी बंदे को देख के डिसिप्लिन नहीं चाहिए. फॉर एग्जाम्पल लेस मार्क इज नॉट क्लोज टू मी, तो उसको मैं हार्श पेनल्टी दूंगा या हार्श पनिशमेंट दूंगा. दीपिका इज वेरी क्लोज टू मी, तो माइट बी आई कैन गिव हर अ लिलेंट पनिशमेंट या उसको कभी कभी वे ऑफ भी कर दूंगा. ऐसा नहीं. इमोशंस पे कंट्रोल करके अगर जो गलती करता है वो गलती को आपको पनिशमेंट या पेनल्टी देना है. दैट इज सेड टू बी इन योर impersonal discipline. You will not see the employees. You need to control your emotions. When you control your emotions, you can easily can give that equitable fare to the employees. That's said to be in your impersonal discipline. Review discipline decisions. Whenever the decisions are formed, it needs to be reviewed in a proper way. क्या है कि ज्यादा हार्श, व्हाट यू से, मोर हार्श डिसिप्लिन इज आल्सो नॉट गुड फॉर द वर्किंग एनवायरनमेंट. लिलेंट होना चाहिए या एक व्हाट यू कंसिस्टेंट, व्हाट यू से कंसिस्टेंट पनिशमेंट इज गुड. अगर हार्श होता है तो इट इज अगेन कैन हैव इल इफेक्ट on organizations. So before giving your decision, always review it. ये पेनल्टी कैसा है या ये पनिशमेंट कैसा है, ये ठीक ठाक पनिशमेंट है ना, तो दैट नीड्स टू बी रिव्यूड. Okay, then next you have notification of conduct that may result in discipline. Notification is important. You need to notify the employees. सारे एम्प्लॉयज को पता होना चाहिए कि कौन से गलती के लिए क्या आपको पेनल्टी है. 3 बार आप ऑफिस में लेट आओगे तो आपको पेनल्टी क्या होगा, इसका सारा नोटिफिकेशंस इंफॉर्मेशंस इट नीड्स टू बी गिवन टू दी employees. Employees should be well versed, aware about whatever punishment, whatever penalties they will get if they do the misconduct in an organization. So well versed notification देना बहुत important है. So notification is important. Okay. Information regarding the penalties, as we have discussed in our previous point, the information, whatever information is required about the penalties, it needs to be informed to the employees as well. कि उनका reprimandal क्या होगा, discharge, dismissal,
कौन से गलती पे वार्निंग मिलेगी, कौन से गलती पे आपको डिस्चार्ज किया जाएगा, कौन से गलती पे आपको निकाल देंगे। अगर आपने मेंटल असॉल्ट किया या फिजिकल असॉल्ट किया वुमन का, तो सस्पेंशन ऑफ अ जॉब, टर्मिनेशन ऑफ अ जॉब। ओके, अगर आपने फ्रॉड किया कंपनी में तो आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी जब्त हो जाएगी। ओके, आप पे पुलिस केस होगा, यू माइट हैव टू फेस अ कोर्ट। So the XYZ things are there that need to be get informed to the employees as well. Okay, then discipline shall be progressive. See, discipline shall be progressive का मतलब होता है कि हमेशा जो भी आप डिसिप्लिन रखोगे या डिसिप्लिन कंडक्ट करोगे कंपनीज में, इट शुड गो एट ए हायर साइड। हमेशा वो डिसिप्लिन और थोड़ा स्ट्रॉन्गर 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 होके कंपनी में एक वर्किंग कल्चर होना चाहिए जहाँ पे there is no scope, there should not be no scope that any employee can take an undue advantage of that situations. तो हमेशा आपका पेनल्टी या डिसिप्लिन हमेशा बढ़ते रहना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। कम हो गया तो क्या हो गया, लोगों के मन का डर निकल जाएगा और लोग ग्रांटेड ले लेंगे। तो जैसे आप पनिशमेंट दोगे, जैसे ही ऑफिस में डिसिप्लिन उसको मेंटेन या एट दी पर हमेशा रखोगे, तो लोगों के मन में डर रहेगा। डर रहेगा तो लोग ऑफिस में टाइम से आएंगे, काम टाइम से खत्म करेंगे, अपना अच्छा परफॉर्मेंस देंगे, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा, सारा चीज हमेशा होता रहेगा। सो डिसिप्लिन ऑलवेज शैल बी इन अ प्रोग्रेसिव मोड। Okay, next you have documentation. Whatever penalties, whatever discipline, whatever charges, discharges, discipline action was taken against the employee, it should be in a written format. एक एम्प्लॉय के अगेंस्ट जो भी चार्जेस फाइल किया गया है, वो सारे चार्जेस को लेके एक डॉक्यूमेंटेशन रिपोर्ट होना चाहिए। इट द रिपोर्ट शुड बी साइन बाय सर्टेन अथॉरिटी, वुड बी द डिपार्टमेंटल हेड, कंसर्न पर्सन, एलिगेशन जिस पे हुआ है वो वाला पर्सन, जिसने रिपोर्ट को नेलीफाई किया या जिसको सॉल्व किया वो पर्सन का सिग्नेचर। तो इट शुड बी इन अ वेरी डॉक्यूमेंटेशन फॉर्मेट में होना चाहिए। तो इन फ्यूचर अगर वही बंदे ने वापस कोई गलती करता है, तो वी कैन गिव हिम द रेफरेंस ऑफ द प्रीवियस मिस्टेक्स ही हैव मेड, कि देख भाई 2017 या 18 में भी तूने यही सेम गलती दोहराया था जो तू ये साल दोहरा रहा है। तो वी कैन take the cumulative of both the actions, both the problems, and we can take a serious actions against you. So this documentation will help the companies to take a firm decisions against a employee. Okay, then you have discipline should be fair. Yes, the discipline is more important, should be fair with every employee in a company. मैंने ऐसे बोला कि लेसमा के लिए अलग सा डिसिप्लिन, दीपिका के लिए अलग सा डिसिप्लिन, वैसा नहीं होना चाहिए। इट शुड बी फेयर इनफ फॉर बोथ द एम्प्लॉयज। दीपिका ने भी जो गलती किया उसको भी सेम पनिशमेंट मिलना चाहिए, और लेस्मार्क ने भी जो गलती किया उसको भी सेम पनिशमेंट मिलना चाहिए। दैट इज सेड टू बी अ डिसिप्लिन शुड बी फेयर। Then second last you have discipline shall be flexible and consistent. See, flexible का मतलब ये नहीं कि आप छूट दे दो। flexible का मतलब होता है कि you take the decision, but थोड़ा सिचुएशन समझ के, अगर कुछ मिसकन्फ्यूजन हुआ है, मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ है, तो ऐसे मोड पे यू शुड नॉट टेक द हार्श डिसीजंस। you can take light decisions, you can take flexible decision, but there should be some action should be taken against the employee despite is a misunderstanding। तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप उसको छोड़ दो। मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुआ है तो यू कैन गिव वार्निंग, यू कैन गिव अ स्मॉल पेनल्टी ऑफ 500 रुपीज, 1000 रुपीज, जो भी आप उसको लग रहा है आप दे सकते हो, लेकिन आप उसको थोड़ा सा टिल्ट करके फ्लेक्सिबल उसको कर करके आप करेंगे, लेकिन इस पे एक्शन तो होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ है तो उसको छोड़ दिया, नो, इट शुड नॉट बी हैपन। Okay, and last it has a disciplinary action should be prompt. मोस्ट इंपॉर्टेंटली अगर डिसिप्लिन इनडिसिप्लिन कंपनी में हुआ है तो वही वक्त पे, उसी वक्त पे उस पे एक्शन होना चाहिए। अगर आज उसने गलती किया है और आप 2 महीने के बाद उसको सजा सुनाओगे तो इट विल नॉट वर्क।
इम्पोर्टेंटली अगर आज उसने गुनाह किया है, उसने कुछ प्रॉब्लम क्रिएट किया है, तो विद इन 3 days there should be action should be implemented on the said person or a concerned person. उसको हम लोग बोलेंगे disciplinary action should be prompt. Understood? Okay, understood all these points? Yes, sir. Yes, sir. Easy to understand? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके तो आज के लिए हम लोग इतना कंप्लीट करते हैं. आई गेस वी हैव कंप्लीटेड 12 स्लाइड्स. ओके तो हमने 12 स्लाइड्स कंप्लीट किए. तो अगर कल हमको टाइम मिलता है और 1 घंटा, तो वी कैन कंप्लीट मोर स्लाइड्स. सर कैन वी गेट? सर हाँ, कल कल 1 बजे सुष्मिता मैम का लेक्चर है, तो आपको अगर चाहिए तो उससे पहले ले सकते हो या उसके बाद भी, पता नहीं. उसके पहले किसी का लेक्चर है क्या? नहीं सर. नहीं है sir. तो शैल वी कीप अराउंड मॉर्निंग में, मैं टाइमिंग कंफर्म करके मैसेज करता हूँ ग्रुप पे. इफ पॉसिबल 9 o'clock या 10 o'clock को रखते हैं हम लोग लेक्चर. ओके सर, फाइन, चलेगा. तो आपको भी 10 से 11 में हम लोग का लेक्चर हो जाएगा. तो यू हाँ विल सर. ऑल्सो गेट सम ब्रेक. तो सुष्मिता मैडम का लेक्चर आप 1 बजे बैठ सकते हो. ओके हाँ, सर. हाँ, तो एटलीस्ट वी कैन कम टू द क्लोजर पार्ट ऑफ यूनिट 2. ओके सर, फाइन. ओके, यस सर. एनी डाउट इन टुडेज सेशन? नो सर, नॉट. ओके, वेरी इजी एंड क्लियर ना? यस सर. Yes, sir. ओके ठीक है. तो विल नाउ क्लोज द सेशन एंड वी विल मीट टुमारो. आई विल जस्ट कंफर्म द टाइमिंग बाय इवनिंग. ओके ओके सर, Okay. फाइन. ओके, थैंक यू वेरी Thank you, मच. sir. थैंक यू सर.